which is showing two things, right? देखिए इसके ऊपर heading क्या लिखी हुई है? It is basically general earthquake design requirements है, right? And it has been taken from your Pakistan building codes for seismic design. So we can see various types of stirrups here, right? Three-sided stirrups and four-sided stirrups. So these stirrups are actually the seismic stirrups or seismic ties, right? The purpose of these ties is to get a locking system in each structural member, like in beams, in columns, in foundations. If you can get a locking system, then the research says that you can get maximum resistance from that structural member. So if you can achieve seismic hooks in all the stirrups of beams and all the ties of columns, actually you are getting close to getting maximum value of R from that structure. Remember, when I use the word R simply means response modification factor, or it is actually the performance of a structure at the time of earthquake. तो उसमें ये एक मेजर रोल होता है आपके hoops, ties और cross ties का, right? So we normally call these as hoops or ties. लेकिन beams में इसको हम stirrups के नाम से याद रखते हैं, right? So actually this is a stirrup, you can see, and in most of the time, now if somebody from you has seen some structures in execution stage, तो आपने ये चीज़ उसमें नोट की होगी. In nowadays we are actually implementing this 135-degree hook. This 135-degree hook is actually a seismic hook. You can see it is written with the text seismic hook. Why it is called seismic hook? Because after the earthquake codes have been generated, your seismic hook requirement has come from the research to get the maximum value of R. जब भी किसी स्ट्रक्चर में आप रिंग्स डिज़ाइन करते हैं, ये रिंग्स जो ये टेक्निकल वर्ड नहीं है, वी कॉल दिस एज स्टिरप्स इन बीम्स, वी कॉल दिस एज हूप्स इन स्लैब्स, एंड वी कॉल दिस एज क्रॉस टाइज इन कॉलम्स. बट एनी हाउ इट इज़ लाइक अ रिंग, राइट, विथ थ्री साइड्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द फोर्थ साइड जो होती है ये इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन पूरी एक रिंग डेवलप करने के लिए आपको चार साइड्स का होना जरूरी है, लेकिन क्रिटिकल स्टेज ये वाली होती है. व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ दिस हुक? The code says it should be 6 dB, 6 times diameter of the bar. Now in nowadays, when we are designing the stirrups and ties and hoops for various structural members in a structure, we are actually using number 3 bars. आप इसके साथ used to है because आपने RCD 1 पढ़ा हुआ है, so you are familiar with this. What is number 3 bars, right? It is 3 by 8 inch diameter bar. इस सरिये को या इस बार को हम यूज़ करते हैं मोस्टली हर एक तरह की रिंग बनाने के लिए. When I use the word ring, it means we are discussing the stirrups and ties and all these things. So this is most probably made of number 3 bars, right? Number 3 bars को ब्रिटिश सिस्टम में number 3 कहते हैं, और अमेरिकन सिस्टम में या ऐसे यूनिट्स में इसको हम 10 mm बार कहते हैं, 10 mm die bars, right? So if we go with the cross hook or 135-degree seismic hook, the extension of this hook must be 6 times diameter of the bar. So if we are using number 3 bar, it should be 6 times 3 by 8 inches, or it is like, I would say, 2.5 to 3 inches, right? So if you are visiting a site, you are extending on a site, you are executing a seismic design of stirrups and ties in a structure, you should always make sure that you get this 135-degree angle of hook from each ring. चाहे वो बीम में है, चाहे वो कॉलम में है, चाहे फाउंडेशन में, it should be 135 degree. Number 1. Secondly, you should have execution of this 135 degree hook in all the rings, in all the stirrups and ties of that structural members. ये कंपल्सरी है. तो ये तो आपकी जनरल रिक्वायरमेंट है, राइट? इसको हम कहते हैं सीस्मिक हुक रिक्वायरमेंट. अब इसके ऊपर नॉर्मल जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड वो ये होता है कि आप इसके ऊपर एक अलग से क्रॉस टाई दे देंगे यहाँ पे इसको लॉक करने के लिए. लेकिन इन नाउअडेज फॉर इजीनेस द स्टील फिक्सर creates this thing with a single ring, with a single bar, with a single piece of bar, right? So in that case you will not get this two-sided hooks, you will get the hook on the same side. You will get two hooks, like one hook comes from downside, the other hook comes from upside.
both of these should meet each other at 135 डिग्री. इसको 135 डिग्री seismic hook कहते हैं. तो ये भी acceptable है. इसको हम क्रॉस ट्राइज या क्रॉस स्ट्रिप टाइज सिस्टम कहते हैं. So that is the practical execution. ये theoretical होती है. This thing is not achieved practically because दोनों साइड पे आपके रिंग्स के हुक्स नहीं आ सकता. वो अगर आप क्लोज टाई बनाते हैं तो एक साइड पे आएगा, लेकिन वो डबल हुक होगा, something like this. So if the steel fixer has not achieved this 135 degree hook, अगर एक साइड पे अचीव किया और ऊपर वाला अचीव नहीं किया, फिर भी आपका ये हुक जो है सीज़मिक हुक नहीं कराएगा. और ऐसी स्ट्रक्चर के लिए आप कभी भी आर की वैल्यू जो है वो 8.5 नहीं ले सकते. इनिशियली जितनी स्लाइड्स 3-4 में डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर द स्लाइड्स विच आर एक्चुअली हेल्पिंग अस टू डेवलप एन SMRF स्ट्रक्चर, स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम. याद रखिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपके SMRF की हैं, जिसमें आप आर की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम आर इज इक्वल टू 8.5 इसमें हम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने ये चीज़ डिज़ाइन में एग्जीक्यूट करनी होगी. सो यू हैव टू शो योर स्केचेस विद दिस 135 डिग्री हुक्स, आल्सो नोन एज सीज़मिक हुक्स. चाहे वो बीम के स्केचेस हैं, चाहे वो कॉलम के स्केचेस हैं. जब हम इसकी प्रैक्टिकल डिज़ाइनिंग करेंगे विल सी दिस स्केचेस, विल बी यूज्ड टू दैट दीज थिंग्स. लेकिन अब इसको हम सिर्फ इम्पोज डिज़ाइनिंग की हद तक सीख रहे हैं. ओके, नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, the most important thing to achieve in a seismic design of RCC structure is to get the required value of FC prime. Required value of FC prime. FC prime stands for concrete crushing strength, right? So this is the representation of concrete strength in columns, in beams, in slabs, in stairs, in RCC walls, in foundations, in all the structural elements. What is the word FC prime and what is the numerical value acceptable? It is 3000 psi cylinder strength for all types, whether you are designing SMRF, IMRF or OMRF structures. The minimum strength requirement in all structures for earthquake designing is 3000 psi cylinder strength. Why I am focusing on this line? Because in जो हम MSc engineers आजकल उनको हम ट्रेन कर रहे हैं, the MSc engineers in structures, तो हमारा 90% जो कोर्सेज है उसका फोकस जो है एक लाइन के ऊपर है, हाउ टू गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ FC प्राइम फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? इफ यू हैव achieved a value of FC prime less than 3000 psi in a structure, that structure is not called earthquake resistant structure. And let's say आपका एक स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें 2 रूम्स है, राइट? उसके 2 रूम्स हैं, उसके बीम्स हैं, फ्रेम बना हुआ है, नीचे कॉलम्स हैं, समथिंग लाइक दिस. When you are able to achieve this FC prime 3000 psi in columns, but you are not able to achieve it in beams, or for example you are able to achieve this value in beams and slabs, but you are not able to achieve this value on side for columns, so that structure is not called earthquake resistant structure. Minimum requirement क्या है? 3000 psi. हम कोशिश कर रहे होते हैं ऐसे हमारे स्ट्रक्चर में कि आपके डिज़ाइन में हम FC प्राइम की वैल्यू 4000 psi लें, राइट? सो देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट फॉर कंक्रीट स्ट्रेंथ, बट नॉर्मली 5000 psi इज़ रिकमेंडेड फॉर लाइट वेट, और आजकल हम 5000 ही रिकमेंड करते हैं मैक्सिमम वैल्यू नॉर्मल कंक्रीट के लिए भी. इससे ज़्यादा अचीव करना साइड पे प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है और थोड़ा अचीव करना मुश्किल हो जाता है. यू हैव टू यूज सो मेनी एडमिक्सर्स टू गेट दिस वैल्यू ऑफ FC प्राइम. So I am focusing on this point when you are designing RCC structure and the heading is it is earthquake resistant structure, then the codal requirements is that your SMRF structure or IMRF structure or OMRF structures must get at least cylinder 3000 psi. याद रखिए ये क्यूब नहीं है, क्यूब स्ट्रेंथ नहीं है. क्यूब स्ट्रेंथ जो है ये फिर तकरीबन 4000 के करीब होगी. The cylinder strength should be at least 3000 psi FC prime. Once you decide this thing in your design, right, the value of FC prime, whether 3000, 4000, 5000, then you have to deal with this value of FY. FY is called the yielding strength of steel in all the members of structure to be designed for earthquake. तो earthquake resistant structures के लिए आपकी जो yielding strength of steel होती है उसके recommendable grade कौन सा है? That is grade 60. That is grade 60. You cannot use grade 40 steel to achieve the required parameters for earthquake designing. So in nowadays the steel that is available
in various areas. Steel that is available in the market, it is normally grade 40, but you are supposed to use grade 60 steel to get the value of required parameters from earthquake resistant structures, right? अब इस ग्रेड 60 स्टील की जितनी भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर 4-5 पैरामीटर्स हैं जो आपने सारे अचीव करने होते हैं अर्थक्वेक डिजाइनिंग में, राइट? उसको हम ASTM A706 कहते हैं, राइट? लेकिन इसको जब ASTM अमेरिकन 706 का जो चैप्टर है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स टेस्टिंग मैनुअल्स में, उसमें सारा एलॉय स्टील का जिक्र है, जबकि ग्रेड 40 और 60 जो है वो एक और चैप्टर है ASTM का A अमेरिकन, A stands for American Standards, and 615. This standards actually recommends the required properties, or it gives you the required properties for billet steel. Billet steel से आपकी क्या चीज़ बनती है? Steel bars of all diameter that is required for RCC structures. तो हम जो है जितनी भी स्टील की प्रॉपर्टीज अपने डिज़ाइन में, सॉफ्टवेयर में, मैनुअल एनालिसिस में डालते हैं, we use these codes ASTM A615. Always remember, if somebody asks you what are the governing codes to get the required parameters or properties of steel for earthquake resistant design, that is ASTM A615. remember this thing. ये 706 जो एलॉय स्टील है जो आजकल दुनिया में तो यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान में हमारे पास एलॉय स्टील अवेलेबल नहीं है. वी हैव टू इंपोर्ट दैट बिलेट. सो नॉर्मली द बिलेट्स दैट आर अवेलेबल इन पाकिस्तान विच प्रोड्यूस ग्रेड 40 एंड ग्रेड 60 स्टील, these are coming under the umbrella of ASTM 615. इसका स्टैंडर्ड ही है. तो इस स्टैंडर्ड के अंदर जितने भी गाइडलाइंस हैं, राइट, कोफिशिएंट एक्सपेंशन है, आपका यील्डिंग स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, पॉइजन्स रेशो है, वो सारी चीज़ें आपने कहाँ से उठानी है? ASTM 615. Because nowadays the softwares that we are using for analysis and designing of RCC structures for earthquake, we are getting all the required values from this ASTM 615. और ये काम मैनुअली में भी होता है. आप देखेंगे जब हम फ्यूचर में इसकी प्रैक्टिकल डिजाइनिंग की तरफ आएंगे, राइट? वी विल बी सॉल्विंग various problems for slabs, beams, columns, foundations in coming lectures, right? So anyhow, now this is the guideline for lab engineers, right? Those engineers who have done the BSc. You see, nowadays we have got the UTM machine in our university, and I'm in charge of material testing lab, MTL lab का मैं in charge हूँ. तो वहाँ पे the commercial testing is coming to us. We are getting the samples, we are doing this testing, and we are giving them the required values of these samples. But we are using this again ASTM 615 guidelines. तो UTM में जितने भी हम टेस्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वो सारे इस अम्ब्रेला के अंडर कर रहे हैं. उसके लिए दो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मैंने आपके सामने लिखी हुई है, आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम द स्टूडेंट्स क्लियर द सब्जेक्ट ऑफ RCG2, और सब्जेक्ट्स क्लियर करने के बाद भी उनको ये पता नहीं होता कि FY क्या है, ग्रेड 60 स्टील की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आपने कैसे yes और no में एक्सेप्ट करना होता है जब आप प्रैक्टिकल जो है उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, राइट? सो दिस इज द रेलेवेंट फील्ड, द इंफॉर्मेशन. You see there is a text written here, FY actual minus FY specified. What is this thing? You have done a design of a beam, right, or a slab or a column or a frame, complete structure, and you have specified in your design that the FY for the steel to be used in all these members should be, let's say, grade 60, right? So its yield strength क्या होगी grade 60 की? 60,000 PSI. इसको हम FY या F yielding कहते हैं ना. तो आपने डिज़ाइन में पहले पेज पे मेंशन किया हुआ है कि यील्डिंग स्ट्रेंथ आपने यूज़ करनी है सारे कैलकुलेशंस में कितनी? 60,000 PSI. सो इफ समबडी इज यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, उसमें भी हर जगह पे जहाँ पे FY लिखा आएगा उसकी जगह पे उसने क्या डालना है? 60,000 PSI. दिस इज द डिज़ाइन स्ट्रेंथ specified in the drawings, specified in your design, analysis, calculations, all this stuff. The other thing here is the actual strength that you get from the sample or from the steel that is available on site. The same sample is actually testing in the UTM. तो हम डिज़ाइन को प्रॉपर अचीव करने के लिए उसी साइट की स्टील के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और हम उसको ला के UTM में टेस्ट करते हैं. सो लेट्स से द स्टील स्ट्रेंथ दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सैंपल्स एक्चुअली differs, or it is different from the specified steel strength, right? Now the code says that the difference between the two should not be greater than 18,000 PSI. यानी 18 PSI, शॉर्टकट में इसको हम 18 PSI कह सकते हैं, या इसको हम 18,000 PSI कह सकते हैं. ये आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है. Try to understand this point. The difference between actual strength that you get on site and the specified strength which is mentioned in the design, the difference should be less than 18,000 PSI. It should be, let's say, 5,000, 6,000 something, 7,000, 8,000, maximum 18,000.
नाउ व्हाट इज दिस मीनिंग इन नाउ डेज? ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है अर्थक्वेक डिजाइनिंग में. आपने लेट से ग्रेड 60 स्टील को रेकमेंड किया और आपने अपने डिजाइन में इसको यूज किया हुआ है, राइट? प्रैक्टिकली स्टील जो साइट पे अवेलेबल है, अगर उसका यूटीएम में टेस्ट किया गया है, लेट से वो स्ट्रेंथ का टेस्ट जब किया गया है तो एफ आई आपकी आ रही है 60 की बजाय 80,000 PSI, राइट? सो जो लैब इंजीनियर होता है, ये जो साइट पे द साइट पे एग्जीक्यूशन इंजीनियर होता है, जो आपने बनना है बाद में एट द BS लेवल. व्हेन यू गेट द BS डिग्री, यू विल बिकम the site engineers, most of you, right? On various sites you will be dealing with various projects, and there can be a detailed inquiry on you if you do not understand these things, right? आपके साइट पे एक स्टील के लॉट आई है, राइट, फ्रॉम द कंट्रैक्टर साइड, एंड यू हैव टू अप्रूव दैट स्टील दैट दिस इज फाइन और नॉट. आपने यूटीएम के लिए सैंपल्स साइट से भेजे हैं किसी भी लेबॉर्ट्री में, राइट? यूटीएम का रिजल्ट आ गया, राइट? क्या आ गया? रिजल्ट आ गया. अब आपके पास डिज़ाइन भी पड़ा हुआ है साइट के ऊपर. डिज़ाइन में स्ट्रेंथ मेंशन्ड है 60 ग्रेड, जिसका मतलब भी होता है FI 60,000 PSI. और साइट पे जो स्टील पड़ी थी उसका यूटीएम का जो रिजल्ट आया है उसकी FI लेट से आई है 80,000 PSI, राइट? सो इफ़ यू आर लेमैन इंजीनियर, राइट, तो आप इसको क्या कहेंगे? आप खुश हो जाएंगे. यू विल बिकम वेरी हैप्पी दैट वी हैव गॉट अ परफेक्ट स्टील ऑन साइट which is giving us 20,000 more strength than required, which is giving us 60,000 की बजाय हमें FI कितनी दे रही है? 80,000 PSI. बट टेक्निकली दैट इज अ फेल्ड स्टील, दैट इज नॉट अलाउड. यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है. इफ यू आर गेटिंग अ स्टील ऑन साइड विच गिव्स यू मोर स्ट्रेंथ देन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, then the difference should not be greater than 18,000 PSI. It should be 5 to 6,000 PSI. Practically हम इतना अलाउ इससे ज़्यादा करते नहीं है. 10,000 भी हो जाए तो हम उस पर हमें एक अलार्मिंग सिग्नल बच जाता है. वाई? ये क्यों होता है? The requirement for yielding strength of 60,000 PSI in the ASTM standards is different from the requirement of yielding strength of 70,000 PSI. तो एक स्टील की अगर yielding strength 70,000 PSI आती है तो उसके अंदर gripping requirement, development length, आपके टेंशन स्प्लाइसिस, कंप्रेशन स्प्लाइसिस, सीस्मिक हुक्स, आपके सारे जो है उसको चेंज करना पड़ेगा. आपको सारा डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा आपकी साइट के ऊपर. अगर स्टील जो है उसकी स्ट्रेंथ का डिफरेंस 80,000 या उससे ज़्यादा है तो आप अलाउ नहीं करेंगे. यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट रिजल्ट दैट ये तो परफेक्ट स्टील है. मोस्टली कंट्रैक्टर्स मिसगाइड दोज फ्रेश इंजीनियर्स ऑन साइट दैट देखिए आपने तो डिज़ाइन में आपकी जो है तो ग्रेड 60,000 है यील्डिंग स्ट्रेंथ, हमारे पास तो साइट पे 80,000 अचीव हो रही है, 90,000 अचीव हो रही है. मैंने ऐसी स्टील भी देखी है जो साइट के ऊपर हमें 94,000 दे रही होती है यील्डिंग स्ट्रेंथ, जो बाय एनी स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है. बिकॉज वो आपके पूरे के पूरे से डिज़ाइन चेंज होगा. आपने सारे के सारा बार बैंडिंग शेड्यूल इसका चेंज करना पड़ेगा. आपको जितने भी आपकी सीस्मिक रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने इसमें मैं ये किया ना, ये देखें अब ये मैंने आपने यहाँ पे ग्लव्स यूज़ किया है, दैट द एक्सटेंशन ऑफ दिस हुक फ्रॉम बोथ साइड्स आर ऑन बोथ साइड्स हियर, इट शुड बी 6 dB मिनिमम. तो नंबर 3 बार्स का 6 dB तकरीबन 3 इंच बनता है, 3.25 इंच. लेकिन ये अगर ग्रेड 60 स्टील नहीं है, अगर उसका FY जो है वो 70, 80, 90,000 है, तो ये फिर 6 dB काम नहीं करेगा. आपने इसको 9 to 10 dB और 12 dB तक ले जाना होगा. लेकिन आपका डिज़ाइन में सब जगह 6 dB लिखा हुआ है. सो इट मीन्स दैट व्हाट, यू विल नॉट एक्सेप्ट दिस डिज़ाइन, यू विल रिजेक्ट दिस होल स्टील. चाहे वो साइड पे 10 टन आई है या 1,000 टन आई है, यू विल हैव टू स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ दैट वर्क. यू हैव टू रिप्लेस दैट स्टील. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें अक्सर फेलियर होता है जब आपकी डेवलपमेंट लेंथ अचीव नहीं होती. I hope that you are familiar with this word development length. If RCD1 का मेन सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट के चैप्टर का हिस्सा है कि आप डेवलपमेंट लेंथ जो है वो बेसिकली ये एक बॉन्डिंग लेंथ होती है. जब आपका स्टील किसी कंक्रीट के अंदर हम प्लेस करते हैं बार्स की शक्ल में, उसका एक बॉन्ड बनता है कंक्रीट के साथ, और वो बॉन्ड किससे बनता है? लेंथ ऑफ द स्टील से. तो जितना आपकी स्टील की यील्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसको बॉन्ड करने के लिए कंक्रीट के साथ आपको हुक्स, स्टिरप्स, आपका कंप्रेशन स्प्लाइसिस, टेंशन स्प्लाइसिस, ओवरलैपिंग आपने सारी ज़्यादा करनी होगी ताकि वो स्लिप थ्रू ना हो जाए. अदरवाइज आपका स्टील जो है फेल नहीं होगा, स्लिप हो जाएगा कंक्रीट से, आपका कंक्रीट क्रैक हो जाएगा, आपकी RCC स्ट्रक्चर और मेंबर की फेल हो जाएगी ओनली बिकॉज ऑफ दैट वन पॉइंट एजेंडा, जो कि अक्सर फ्रेश इंजीनियर्स मिसगाइड होके एक्सेप्ट कर लेते हैं दैट दिस इज द एक्सेप्टेबल स्टील बिकॉज हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा दे रही है. सो वी डू नॉट रिक्वायर ग्रेटर स्ट्रेंथ. We only require the strength that is mentioned in the drawings, because the whole drawings or set of drawing is based on this FY. If you are not getting the FY required in the specification, you should reject that whole steel lot. Now, second thing, the ratio between the actual strength and the ultimate, yielding strength. Actual ultimate strength and the actual yield strength.
इनका रेशो जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 1.25। क्या मतलब है? हर एक स्टील का एक यील्डिंग स्ट्रेंथ होता है, एक उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज एक्चुअली द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, जिसमें आपकी स्टील नेकिंग शुरू कर देती है। यूटीएम में आपने टेस्ट किया होगा ना, नेकिंग ऑफ द स्टील शोज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टेज, उसके बाद आपकी स्टील टूट जाएगी। सो द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इफ इट इज लेट्स से 1 लाख या 95,000 एंड योर यील्डिंग स्ट्रेंथ इज से 60,000, दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी मोर देन 1.25, राइट? ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग बिकॉज you will be using these two lines all the time in your career until or unless you do not get the MS degree, right? You will be dealing with these two things, remember। ये दो आपके लिए हमेशा आपके साथ बंधे रहेंगे। चाहे आप बाहर किसी मुल्क में जाते हैं, when you're doing the job of engineer in a company in Pakistan, overseas, you will be dealing with this thing। आपके ऊपर इंक्वायरीज कॉल होंगी जस्ट दैट सिंगल लाइन की वजह से, अगर आप इस पर नहीं समझते, राइट? अगेन मैं इस पर थोड़ा फोकस करता हूँ। लेट्स से साइड पे एफसी प्राइम आपके पास आई है 2800 PSI, 2800 PSI, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट डिजाइन में 3000 PSI। मैं अगेन इस स्लाइड पे फोकस कर रहा हूँ। एक और रिजल्ट आपके पास आया, आपने साइट के ऊपर टेस्ट किए हैं, और साइट के ऊपर पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं दे आर डूइंग द टेस्टिंग ऑन क्यूब्स, दे मिसगाइड यू। सो क्यूब टेस्टिंग जो है वो सिलेंडर टेस्टिंग की कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकती। क्यूब टेस्ट से रिजल्ट आपके पास आ रहा है लेट्स से 3500 PSI, राइट? तो वहाँ पे तो कंक्रीट टेंशन स्ट्रेंथ लिखी होगी 3500 PSI, एंड द कंडक्टर विल टेल यू लुक द रिक्वायर्ड डिजाइन स्ट्रेंथ इज 3000, वी हैव अचीव्ड 3500। तो उसको मिठाई खिलानी चाहिए। टेक्निकली यू शुड से कि आपकी ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जिसमें आपने ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ अचीव की सारा फेल हो गया, डिमोलिश इट, चाहे वो 1 करोड़ का काम क्यों नहीं है। यू हैव टू स्टॉप execution. Why? The concrete is failed. Why if it is failed? It is 3500. The contractor will say it is 3500. You are getting 3500 PSI आपको मिल रही है, और आपके साइट रिक्वायरमेंट जो है डिजाइन की वो 3000 है। लेकिन you should focus in this word cylinder. Cylinder 3000 PSI is numerically equivalent to 3800 PSI cube strength. तो अगर आपकी क्यूब स्ट्रेंथ 4000 PSI आ रही है फिर तो ठीक है, लेकिन कभी भी नहीं आएगी। आई एम फेमिलियर विद दिस कंट्रैक्टर, ऑल दिस स्टफ। वो हमेशा 3000 क्यूब के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, बट इट शुड बी मिनिमम 3000 सिलेंडर, अदरवाइज आपकी स्ट्रक्चर जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कहला ही नहीं सकती। इफ इट इज गिविंग अ स्ट्रेंथ लेस देन 3000 सिलेंडर, इट इज नॉट कॉल्ड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो आपकी आर की वैल्यूज में आप अचीव ही नहीं कर सकते। इट्स लाइक अ रेजिडेंस देन। तो फिर इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? फिर उसमें फ्रेम बनाने का फायदा क्या है? सेम इन द केस फॉर यील्डिंग स्ट्रेंथ, राइट? इफ contractor has got a lot, right? He has got a lot of steel, let's say 1000 tons, जिसकी प्राइस बनती है लेट्स से 100 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल, बिकॉज आजकल कुछ 1.5 लाख रुपए का तो 1 टन बन गया, राइट? सो उसने आपके पास लाट को स्टॉक किया। अभी 2 प्रोजेक्ट्स में हो रहा है मेरे साथ, जिसमें 1000 तकरीबन ऑलमोस्ट उसमें 3500 टन स्टील लगेगी। तो मेगा प्रोजेक्ट्स है पेशावर के। एनी हाउ, तो उसने एक लाट परचेज किया, कराची से इंपोर्ट होकर ड्राई पोर्ट से आई है, और यहाँ पे डंप कर दिए उसने। यू हैव कलेक्टेड द सैंपल्स फ्रॉम साइड एंड यू हैव टेस्टेड दोस सैंपल्स इन द यूटीएम, राइट? यू आर गेटिंग अ रिजल्ट ऑफ FY इक्वल टू 60,000 और 65,000, तो एक्सीलेंट है। लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होती है जिसको हम FU कहते हैं, तो रिमेंबर इन द कोड्स, यहाँ पे आगे स्लाइड्स में है, लेकिन चले अभी पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ, आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। FU जो होता है जिसको फेलियर स्ट्रेंथ कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, इसके बाद तो फेल हो जाती है, इट शुड बी 30,000 मोर देन द यील्डिंग स्ट्रेंथ। क्या रिक्वायरमेंट है? 30,000 मोर होना चाहिए। तो अगर ये 60,000 है तो आपकी FU क्या होगी इसकी, ग्रेड 60 की 90,000 PSI। FU स्टैंड्स फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, जिसके बाद उसका फेलियर होगा 90,000। FY कितनी है? 60,000। FU कितनी होनी चाहिए? 90,000। अगर FY आपकी साइड पे अचीव हुई है 65,000, तो FU कितनी होनी चाहिए? 95,000। अगर FY आपकी अचीव हुई है साइड पे 70,000, तो FU कितनी होनी चाहिए? 100,000, 1 लाख। ये डिफरेंस रहना चाहिए FY में और FU में। तो अगर आपके पास एक साइड पे ऐसी स्टील है जिसकी FY आपको एग्जैक्टली 60,000 या उससे ज़्यादा मिल गई है, दैट इज़ गुड, लेकिन उसकी FU जो है वो 70,000 आपको मिली है, जस्ट 10,000 ज़्यादा FY से। इसको अगेन हम क्या कहेंगे? फेल्ड स्टील, बिकॉज द ASTM A615 recommends that the difference between the ultimate strength and yielding strength of a steel sample should give you a value more than 1.25। तो ये 1.3 रिकमेंडेबल होता है, जो कितना ज़्यादा है? 30% ज़्यादा है।
तो आपकी हमेशा यील्डिंग स्ट्रेंथ से अल्टीमेट स्ट्रेंथ 30% ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज आपका यील्डिंग स्ट्रेंथ ओके भी है, फिर भी आप स्टील को क्या लिखेंगे कमेंट में, एज अ साइट इंजीनियर इज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट यू विल राइट डाउन इन द कमेंट दैट स्टील इज फेल्ड, we are getting good value of FY but we are not getting the required value of FU, so this is not meeting this standard of ASTM 615, your steel is failed, replace it, चाहे वो 100 टन है, चाहे वो 1000 टन है, चाहे वो जितनी भी है, no matter it has cost, it will cost a huge loss to the contractor, लेकिन क्योंकि उसने जो स्टील परचेज की है, अभी मैं रिसेंटली एक साइट पे गया था जिसमें कंट्रैक्टर जो है, I'm conveying this information to you because it is very much related to the subject and practical designing and execution as well. So you should be familiar with this one because site पे आपने इसी के साथ डील करना है हर वक्त, ठीक है. Recently I have visited a site and we have checked the steel results. तो जो contractor था he has actually borrowed a steel lot from China, जिसको हम Chinese steel कहते हैं. So Chinese steel उससे import की है और तकरीबन कोई 100 टन के करीब थी, अराउंड अबाउट कोई 1.5 करोड़ रुपए की स्टील. इट वॉज रिटन ऑन द स्टील दैट इट इज ग्रेड 60. क्या लिखा हुआ था? ग्रेड 60. सो वी हैव डन द बेसिक टेस्टिंग ऑफ द स्टील सैंपल, सारे ओके थी. स्टील आपका जो है वो हमें 63,000 64,000, बाद सैंपल हमें 68,000 तक दे रहे थे स्टील, लेकिन जो स्टील है उसकी अल्टीमेट हमें अचीव हो ही नहीं रही. अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो हमें रिक्वायर्ड है हम वो अचीव नहीं कर सक रहे थे. सारे सैंपल अल्टीमेट में फेल हो रहे हैं, सारे सैंपल फेल हो रहे हैं. सो ये तो पैरामीटर आपका फुलफिल नहीं हुआ. दिस इज पैरामीटर नंबर 1. दिस इज पैरामीटर नंबर 2 टू चेक योर स्टील सैंपल ऑन साइट अकॉर्डिंग टू द डिजाइन मेंशन इन द स्पेसिफिकेशंस. So based on that thing we have rejected the whole lot that has been purchased and that has been brought from China through dry port पूरा. तो वो आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते बिकॉज उससे आपकी फिर ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं डिज़ाइन की ये सारी चेंज हो जाएंगी. एक ये रिक्वायरमेंट और दूसरा ये रिक्वायरमेंट लेकिन इसके बाद आ रही है ये वाली द मेंबर्स डायमेंशनिंग. आपने फिर डायमेंशनिंग को भी चेंज करना होगा. अगर आपकी स्टील जो है सही नहीं है या आपके स्टैंडर्ड्स ASTM के पूरे नहीं हो रहे हैं 615 के जितने भी है बिलेट स्टील स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं. सो आपके बिलेट स्टील स्टैंडर्ड्स के अगर मुताबिक स्टील नहीं है तो आपने इन दो पैरामीटर्स को बेस लाइन बनाना है. और पैरामीटर्स भी हैं उसको हम स्टडी नहीं डिस्कस नहीं कर सकते, आप फिर थोड़ा सा ओवर हो जाएगा. लेकिन ये दो आपने लाजमन याद रखने हैं, ये आपकी RCD2 का कोर्स का हिस्सा है, इसको हम डिज़ाइन में यूज़ भी करेंगे. राइट. सो रिमेंबर दिस थिंग एंड रिमेंबर दिस थिंग एज वेल. रिमेंबर दिस वर्ड सिलेंडर ऑल द टाइम. इट इज़ नेवर क्यूब. ओके. Now talking about the RCC members designing of members cross section, right? ये क्रॉस सेक्शनल डिजाइनिंग जो है SMRF स्ट्रक्चर जो ये याद रखें, हम जितने भी स्लाइड्स जो डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा गोल क्या है? द गोल इज टू अचीव R is equal to 8.5 in the design. When we can achieve the R 8.5 it means that we have designed a perfect structure against the earthquake. तो ये सारे उसके पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर, ये सारा पैरामीटर है. वी आर एक्चुअली डिजाइनिंग दी SMRF स्ट्रक्चर. IMRF डिजाइन नहीं कर रहे, SMRF के मैं सारे डिजाइन पैरामीटर्स आपको दिखा रहा हूँ. राइट. उसी में से एक पैरामीटर ये है डायमेंशनिंग. दिस स्लाइड हेयर. राइट. नाउ दिस डायमेंशनिंग हेयर, ओके वी हैव गॉट दिस डायमेंशनिंग हेयर इज एक्चुअली टेलिंग अस टू थिंग्स. नंबर 1, डेप्थ रेशो विथ लेंथ, जिसको हम स्पैन टू डेप्थ रेशियो भी कहते हैं, L/D. सो बेस्ड ऑन दी BCP SP07 codes for SMRF structures, your ratio between length and its depth of a member should not be less than 4. Let's say we are having a beam, beam है हमारे पास, beam की length है let's say 15 feet, right? और उसकी जो effective depth है वो है 16 inches. यहाँ पे डेप्थ जो है इफेक्टिव डेप्थ है, टोटल डेप्थ जो है H क्या होती है? D + 2.5. आपने RCD1 में सीखा है ना. तो हर एक बीम की दो किस्म की डेप्थ होती है, एक D होता है, एक H होता है. H इज कॉल्ड द विजिबल डेप्थ जिसमें क्लियर कवर इन्वॉल्व होता है. D इज कॉल्ड द इफेक्टिव डेप्थ जो लोड लेने के काम करता है और उसमें क्लियर कवर इन्वॉल्व नहीं होता. एंड योर D इज ऑलवेज इक्वल टू H - 2.5. तो अगर आप साइड पे देख रहे हैं किसी बीम की ड्रॉप जो है वो 20 इंचेस है तो आपका D उसका क्या बनेगा? 20 - 2.5, राइट, 17.5 बनेगा. तो यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है लेट्स से कि आपका D अगर 16 है तो इसका 18 H क्या होगा? 18.5 होगा साइड पे. सो वी आर डीलिंग विद द इफेक्टिव डेप्थ D. नाउ द कोड्स सेज
that to achieve SMRF structure, the ratio between span length हम किसे कहते हैं, the length which is unsupported, एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक, इसको हम span length कहते हैं, represented by ln. अगर वो 15 फीट बन रही है और आपका d 16 बन रहा है, तो इसकी रेशो जो है वो क्या होगी, लेंथ कन्वर्ट दिस इनटू इंचेस, बिकॉज आपका d जो है इंच में है, डिवाइडेड बाय 16, वी आर गेटिंग अ वैल्यू व्हिच शुड बी ग्रेटर देन 4. इट इज फाइन. अगर आपने एक ऐसा बीम डिज़ाइन किया है, राइट, जैसे हमने जब जॉइस्ट स्लैब सिस्टम डिज़ाइन कर रहे थे, वहाँ पे हम रिब्स डिज़ाइन कर रहे थे, रिब्स. तो रिब्स में आपको याद है, तो हमने विड्थ उसको फिक्स किया होता, कितने विड्थ हमने रखी हुई थी, 6 इंचेस, और डेप्थ को हमने फिक्स किया होता जिसके मुख्तलिफ नेम्स थे. वहाँ पे ये चीज़ बहुत काउंट करती है. अगर आपने एक बीम डिज़ाइन किया है जिसकी विड्थ बहुत कम है, उसकी डेप्थ आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा है, डेप्थ आपकी क्या है, बहुत ज़्यादा है. अगर यहाँ पे मैं d इज इक्वल टू 16 के बजाय लिख लेता हूँ 4 फीट, ये 3 फीट 36 इंचेस, तो इसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल बीम. इस बीम को हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल बीम. ये बीम हमेशा बेंड नहीं होगा, ये ट्विस्ट हो जाएगा, इसमें LTB आ जाएगी, इसमें ट्विस्टिंग आएगी. और इसको हम चेक करते हैं किस पैरामीटर से, दिस वन, द रेशियो बिटवीन स्पैन लेंथ एंड डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ शुड बी ग्रेटर देन 4 ऑलवेज. अगर ये लेस देन 4 होगी, इसका मतलब क्या है, आपकी डीप बहुत ज़्यादा है, आपका बीम का ड्रॉप इसकी लेंथ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, इतना आप अलाउ नहीं कर सकते. अगर ये लेस देन 4 आ रहा है तो आपने डी को कम करना है, अदरवाइज ये बीम जो है लोड ले ही नहीं सकता, ये बेंड नहीं होगा. बीम जो है उसका फेलियर मोड क्या होता है, फ्लेक्चर होता है, बेंडिंग. ये बेंड कभी नहीं होगा, ये ट्विस्ट हो जाएगा, राइट. सो यू कैन नॉट अचीव दिस पैरामीटर फॉर अर्थक्वेक डिजाइनिंग इन SMRF स्ट्रक्चर्स इफ योर L by D is not greater than 4. Second requirement, width to depth ratio. मैं बीम के इसलिए एक्सप्लेन किया, कॉलम में भी चेक किया जाता है, स्लैब में भी किया जाता है, स्टेयर्स में भी किया जाता है, RCC वॉल्स में भी किया जाता है, बट आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन टर्म्स ऑफ बीम्स, बिकॉज बीम आप लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं RCD1 में. बाकी चीज़ आपने टेप में डिज़ाइन सीखी नहीं होंगी RCD1 में, राइट. बट बीम इज़ समथिंग दैट इज़ यू आर फेमिलियर विद, राइट. लेट्स से बीम है हमारे पास, उसकी डायमेंशन है 12 इंच विड्थ, 12 इंचेस विड्थ एंड 24 इंचेस डेप्थ. विड्थ कितनी है, 12 इंचेस, डेप्थ कितनी है, 24 इंचेस. तो आपकी जो B by D रेशो होती है, इसको कभी भी 0.3 से नीचे नहीं होना चाहिए. इसका मतलब यह है कि आपकी विड्थ को कभी भी डेप्थ के 1/3 से नीचे ना होना चाहिए. 1/3 मीन्स 30%, राइट. सो अगर आपका बीम जो है उसका ड्रॉप 3 फुट है, 36 इंच है, और आज की विड्थ जो है वो 9 इंच है या 12 इंच है, ये बीम जो है अगेन फेल हो गया. इसका स्पैन लेंथ का कोई ताल्लुक नहीं है. स्पैन लेंथ बेशक 10 फुट है, 20 फुट है, 30 फुट है, योर विड्थ टू डेप्थ रेशो शुड नॉट बी लेस देन 30%. Your width should not be less than 30% of the depth of the beam. तो आइडियल सिचुएशन ये बन रही है, देखें. The ideal standard width of a beam is 12 inches and let's say if its depth is 18 inches. डेप्थ का ताल्लुक जो है आपके स्पैन से होता है. जितना स्पैन बढ़ेगा आपकी इफेक्टिव डेप्थ बढ़ती जाएगी. इसके अपने फार्मूलाज है, आपने RCD1 में किए हुए हैं, आपने बीम्स के प्रॉब्लम्स भी किए हुए हैं. इसको हम इन डेप्थ सीखेंगे जब हम बीम्स की डिज़ाइनिंग करेंगे कमिंग लेक्चर्स में. लेकिन वो तो पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा, सिर्फ अकेला बीम डिज़ाइन नहीं होगा, समथिंग लाइक दिस. बट एनी हाउ यू सी दिस इज इफेक्टिव डेप्थ and your B is 12 inches. Now let's say B by H or B by D is your 12 by 18, this 0.67, this far better than required, so it is fine. लेकिन अगर ये हमारे पास आ जाता है 0.25, तो आप इस बीम को क्या कहेंगे, कैंसिल करेंगे. This design is not acceptable because this design will not give you the SMRF requirements, the SMRF standards required, right. नॉर्मली आपका बीम जो है SMRF स्ट्रक्चर्स में उसकी विड्थ कभी भी 10 इंच से कम नहीं होनी चाहिए. प्रैक्टिकल कितनी है, 12 इंच. साइड पे भी कहीं खड़े हैं ना आप, एग्जीक्यूशन हो रही है, और SMRF स्ट्रक्चर्स हमारा गोल होता है, हमेशा याद रखें. और साइड पे आपके पास बीम्स आ रहे हैं जिसकी विड्थ कितनी है, 9 इंच है. इसको हम कंट्रैक्टर बीम कहते हैं. जब भी किसी ठेकेदार कंट्रैक्टर को आप देखेंगे, जब वो कोई बीम डाल रहा होता है ना, और उसके पास कोई डिज़ाइन ना हो, हमेशा उसकी विड्थ तो क्या रखेगा, 9 इंच. 9 तो उसने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है. चाहे बीम 10 फुट लंबा है, उसकी लेंथ 10 फीट है या उसकी लेंथ 50 फुट है, विड्थ हमेशा क्या होगी, 9 इंच. और टेक्निकली इंजीनियर्स डिज़ाइन में वो बीम हमेशा क्या कहलाएगा, फेल बीम. अ बीम इज ऑलवेज फेल्ड व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड बाय अ कंट्रैक्टर विदाउट डिज़ाइन. रिमेंबर, I am always against the contractors because I have been working with them for the last 20 years
and I have seen so many blunders done by these people who call themselves as technical people. They have got zero knowledge whatsoever. The contractors or builders have got zero knowledge of design, remember. तो जो contractors are direct टर्म की बेसिस पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स बना रहे हैं, remember never purchase this from the contractors because they have done big bullshits in that, and your structure will never be safe or stable when it is executed by a contractor who has not got a design. लेकिन मौके पे अक्सर क्या हो रहा है, अक्सर कंट्रैक्टर्स आ चुके ये मैट्रिक पास होते हैं, या इन्होंने अगर एमएससी की डिग्री ली होती है तो फिर भी इनको मैं मैट्रिक पास ही कहता हूँ, बिकॉज उनके पास इंजीनियरिंग नॉलेज मैट्रिक से ही ज़्यादा नहीं होता, मैट्रिकुलेट होते हैं वो, राइट. सो व्हेन इवन अ डिज़ाइन इज गिवन टू अ कंट्रैक्टर, यू विल नेवर बी एबल टू सी अ डिज़ाइन एग्जीक्यूशन बाय अ कंट्रैक्टर विच इज़ ओके. हमेशा उसमें प्रॉब्लम्स होंगी बिकॉज वो डिज़ाइन एग्जीक्यूशन पे समझते ही नहीं है, उनको डिज़ाइन का नॉलेज ही नहीं है. जब वो रीड ही नहीं कर सकते, हैव यू सीन एनी कंट्रैक्टर who is dealing with this thing? आपके पास कोई ऐसा कंट्रैक्टर होगा गवर्नमेंट का जिसके पास ये नॉलेज हो? उसको तो एसटीएम का पता नहीं होगा. ये एसटीएम किसे कहते हैं? अमेरिका का नाम है कि पाकिस्तान का नाम है? ही विल नॉट बी फेमिलियर विद दिस सिलेंडर क्यूब. कुछ आइडिया नहीं है उसको 3000 का भी कुछ आइडिया नहीं है. यू आस्क हिम व्हाट इज पीएसआई, उसको कुछ पता नहीं है कि पीएसआई जो है टायर का प्रेशर है कि क्या चीज़ है. सो दीज कंट्रैक्टर्स बिकम डब्ल्यू डिग्री कंट्रैक्टर्स और ग्रेड 3 कंट्रैक्टर्स, पूरे उन्होंने नाम लिए होते हैं, जो कि एक बिलियन के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन उनके पास बेसिक नॉलेज जीरो होता है. रिमेंबर दिस थिंग. सो ऑलवेज रिलाय, उसमें फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में तो रिक्वायरमेंट ही होती है कि कंट्रैक्टर्स शुड हायर, दे मस्ट हायर द इंजीनियर्स, द पीएससी रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड इंजीनियर्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट. तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में तो ट्रैप हो जाते हैं बिकॉज वहाँ पे पीएससी की रिक्वायरमेंट है. गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए आप जैसे इंजीनियर्स को हायर करना होता है. लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट को चेक ना हो, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में वो एक 20 स्टोरी प्लाजा भी बना लेना कंट्रैक्टर, उसके पास इंजीनियर नहीं होगा. ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या किया होता है, एक 20,000 रुपीज़ सैलरी के ऊपर किसी बीटेक इंजीनियर को हायर किया होता है. बीटेक नहीं होता, जो बेसिकली टेक्नोलॉजिस्ट है, इज नॉट एन इंजीनियर, रिमेंबर. तो वो इस पर क्या समझता है कि व्हाट इज सिलेंडर स्ट्रेंथ डिफरेंस विद क्यूब स्ट्रेंथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FY एंड FU, व्हाट इज द रेशो ऑफ एक्चुअल एंड अल्टीमेट, व्हाट शुड बी द अचीवमेंट, व्हाट इज ASTM 615, व्हाट इज बिलेट स्टील, उसको कुछ पता नहीं है. सो आपकी सारी एग्जीक्यूशन प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की क्या हो रही होती है, हालत हो रही होती है. डिज़ाइन उसमें फॉलो हो ही नहीं रहा होता. आपने देखा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में कंट्रैक्टर ने कभी ये चीज़ अचीव की है, ये दिस थिंग हैज बीन अचीव्ड? नेवर. he will never be able to achieve it because he doesn't know the importance of this thing. He doesn't know what is SMRF structure, what is the importance of capital R, how we can achieve maximum resistance at the time of earthquake forming structure. कभी भी नहीं. Contractor will never be able. वो होगा क्या? W कैटेगरी, जो कि 2-2 बिलियन के प्रोजेक्ट ले रहा होता है. He has zero knowledge. So again वहाँ पे जब इंजीनियर्स आप हायर होते हैं, you should have this knowledge, right? So sometimes even we see the engineers who are standing on site, they have got no knowledge about this thing whatsoever. They don't know how to control this thing. They don't know how to achieve this thing. कुछ नहीं हो रहा होता. Theories में सारा पढ़ के आ जाते हैं, practical उनको कुछ आइडिया नहीं होती. So this RCT2 subject is actually a practical execution subject which touches, जो आपको एक touches मिल रही है ना practical execution के, ये आपके throughout the life काम आएंगे. ये आपको जो sketch नज़र आ रहा है सामने, this is a sketch which is being shown for SMRF structures requirement. आपका जो SMRF स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, जिसमें आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस हासिल कर सकते हैं अर्थक्वेक डिज़ाइनिंग में, उसमें ये कंपलसरी है कि आपका बीम के अंदर जो मेन स्टील है, राइट, मेन स्टील हर एक बीम के अंदर, इट शुड नॉट बी हैविंग एनी ओवरलैपिंग नियर टू द सपोर्ट. ये आपका देखिए एक कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, राइट. यहाँ पे आपका एक स्टील बार अगर ख़त्म हो गया है, आप यहाँ पे दूसरे स्टील बार शुरू नहीं कर सकते. Never ever allow overlapping or jointing of steel near to the support for earthquake resistant design structures, right? Minimum requirement क्या है? The overlapping of two steel bars in a RCC beam which is designed for earthquake, it should be at least 2h distance away from the support. अब h stands for thickness of the beam, depth of the beam. तो एक बीम जो अगर उसका ड्रॉप 24 इंचेस है, तो 24 इंचेस मीन्स 2 फीट, तो 2 फीट मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन गया? 4 फीट. इट मीन्स दैट उस बीम में आपने कितनी स्पेन के बाद, कितने डिस्टेंस के बाद ओवरलैपिंग अलाउ करनी है? 4 फीट के बाद. दिस इज द गाइडलाइन. लैपिंग, राइट, लैपिंग बोथ साइड्स, ओवरलैपिंग. इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं? लैप स्प्लाइसिस. और एग्जीक्यूशन में इसको हम क्या नाम देते हैं? टेंशन स्प्लाइसिस. रिमेंबर दिस वर्ड्स.
ये आपका टेंशन स्प्लाइस है, इस स्प्लाइस में, इस ओवरलैपिंग में टेंशन आ रही है, राइट। स्टील बार आपकी हमेशा टेंशन में होती है। तो ओवरलैपिंग पोजीशन क्या है? एटलीस्ट 2h डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द सपोर्ट, फ्रॉम द एज ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ SMRF। एक तो ये रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट डिजाइन की क्या है? आपके जितने डिजाइन स्केचेस बनने चाहिए उसमें आपने फोकस करना होता है ओवरलैपिंग के साथ साथ स्टिरप्स की स्पेसिंग के ऊपर, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टिरप्स, ये रिंग्स जो है, राइट। सो एट द पोजीशन ऑफ लैपिंग द स्पेसिंग ऑफ द स्टिरप्स शुड बी एट लीस्ट D/4। D/4 का क्या मतलब है? D इज कॉल्ड इफेक्टिव डेप्थ ऑफ कंक्रीट। जैसे हमने पीछे ये देखा ना, ये लेट्स से D is 16 इंचेस, ये D is 18 इंचेस, समथिंग लाइक दिस। तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ कंक्रीट जो है उसको डिवाइडेड बाय 4 करने से जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, दैट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टिरप्स। कहाँ पे? ओवरलैपिंग पोजीशन में, स्प्लाइस जहाँ पे आ रहे हैं, स्प्लाइस ओवरलैपिंग एरिया, इससे ज़्यादा अलाउ ही नहीं है। और प्रैक्टिकल जो है इसको हम आजकल जो कर रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर्स में, हम स्टिरप्स के दरमियान फासला कितना रख रहे हैं? 4 इंचेस। द प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन recommends that the spacing between two consecutive stirrups should not be more than 4 inches, especially at the overlapping areas. अगर यहाँ पे आपका डिस्टेंस आ रहा है 9 इंचेस, 10 इंचेस, 12 इंचेस, आपका स्ट्रक्चर क्या है? फेल्ड, राइट। इट इज अ फेल्ड स्ट्रक्चर। यू कैन नॉट अलाउ the pouring of such a beam in which your stirrup spacing is more than 4 inches और उसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कि earthquake resistant है। बिल्कुल भी earthquake resistant नहीं है। For earthquake resistance design, your distance should be 4 inches or D/4 minimum distance of stirrups, and your location of overlapping should be at least 2h from the edge of the support. Remember, ये हम execution सारे डिज़ाइन में जब स्केच आप सीखेंगे, हम बनाएंगे आज इसी लेक्चर में, इसी कोर्स में, तो आपने ये सारी चीज़ें बीच में शो करनी होगी, राइट। ये देखें यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स ब्लंडर कर रहे होते हैं। यू कैन सी दिस वेरियस एरोज हेयर, एरोज आपको नजर आ रहे हैं। दिस एरोज आर समथिंग लाइक द एरो हेड इज टुवर्ड्स द स्पेसिमन एंड द टेल इज टुवर्ड्स द टेक्स्ट। बहुत से स्टूडेंट्स स्केचेस जब डिज़ाइन के बनाते हैं तो एरो जो है टुवर्ड्स द टेक्स्ट होता है, वो एरो हेड, और एरो टेल जो है टुवर्ड्स द स्पेसिमन होती है। दैट इज ऑलवेज रॉन्ग। द एरो हेड शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स द स्पेसिमन, जो आप शो करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हैं, एंड द एरो टेल should be always towards the text. ये आप देख रहे हैं, you can see this thing. The arrowhead is always towards the specimen, the arrow tail is always towards the text. That is the right way of doing the sketching or arrowing various areas. Next slide, more important than any other slide. इसको हम कहते हैं slide of the earthwork design. Slide of the earthwork design. जितनी भी रिसर्च अर्थक्वेक डिजाइनिंग में आरसीसी स्ट्रक्चर्स पे हुई है, ये स्लाइड उसका आउटकम है। ये सो इफ यू कैन नॉट अचीव दिस एग्जीक्यूशन, दिस स्लाइड जो आपको बता रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है, इफ यू कैन नॉट अचीव दिस थिंग ऑन साइड, द डिजाइन इज कॉल्ड नॉट अर्थक्वेक डिजाइन, इट इज कॉल्ड ओनली स्टैटिक लोड डिजाइन। स्टैटिक लोड में कौन कौन से लोड आते हैं? डेड लोड और लाइव लोड। तो उसमें अर्थक्वेक लोड का कोई जिक्र ही नहीं होगा। बेशक आप साइड और साइड पे जितनी भी मैं एग्जीक्यूशंस देख रहा हूँ, जितने भी मैं विजिट्स कर रहा हूँ आजकल, सब में ये स्लाइड कोई भी फॉलो नहीं करता, और वो इसको कहते हैं, हेडिंग क्या दे रहे होते हैं? अर्थक्वेक डिजाइन है जी, द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन। दिस इज नॉट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन टू यू और व्हाट इज शोन टू यू इन दिस स्लाइड। इस स्लाइड में लेफ्ट साइड को देखें, लेफ्ट साइड हेडिंग क्या है? मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स, प्रेफरेबली SMRF, जो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर देता है ना। आर क्या चीज़ है? बार बार मैं आपको कह रहा हूँ पिछले लेक्चर का हवाला देके, बिकॉज इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्पेंड द टाइम डिस्कसिंग दैट एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल V CWI/VW/R। आपको याद होना चाहिए, वो आर डिनोमिनेटर में था, एक टाइम पीरियड था, एक आर था। तो ये सारा डिस्कशन उस आर पे हो रहा है। ओके, ये आपका एक कॉलम है, ये आपका बीच में एक बीम रन हो रहा है, ये फ्रेम है ना। नाउ द कोड सेज that your frame should be having a spacing S of the ties. इसको हम स्टिरप्स नहीं करेंगे, ये टाइज होते हैं। अच्छा, और इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट। ये आपकी मेन रिइंफोर्समेंट है, या लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है, या आपकी ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट है। ये सारी ये टाइज अर्थ जब आता है अर्थक्वेक, तो किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में
जो आरसीसी स्ट्रक्चर की सेफ्टी होती है वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट होती है, द टाइस। टाइस क्या चीज़ है? ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट इन कॉलम्स, ओनली इन कॉलम्स। 90% सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर्स अगेंस्ट द अर्थक्वेक इज डिपेंडेंट ऑन दिस रिंग्स ऑफ द कॉलम्स। तो आपके कॉलम, आपके स्ट्रक्चर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 25 किस्म के एलिमेंट्स हैं। स्टेयर्स हैं, आरसीसी वॉल्स हैं, फाउंडेशंस हैं, स्लैब्स हैं, बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, आपके उसमें स्टिफनर्स हैं, डैम्पर्स हैं, ऑल दिस थिंग्स वो सेकेंडरी हैं। प्राइमरी चीज़ आपने जो अचीव करनी है, जो कि आपके अर्थक्वेक रेजिस्टेंस आपको देता है, वो है कॉलम के अंदर जो रिंग्स हैं, राइट। कॉलम के अंदर जो क्या है? रिंग्स हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टाइस कहते हैं। अभी रिसेंटली एक स्ट्रक्चर की रेट्रोफिटिंग की गई है, 5 स्टोरी प्लाजा बना है पेशावर में, राइट। और उसका सिर्फ फेलियर की वजह क्या है? रिंग्स के दरमियान फासला जो है वो इस पर कोड्स नहीं था। जब उस पर 4 स्टोरी 5 स्टोरी बनी है, कॉलम सब क्रैक हो गए हैं, कॉलम्स में लाइन क्रैक्स आए हैं, वो बढ़ते शुरू हो गए हैं, मालिक घबरा गए। उसका डिटेल जो है तो इंस्पेक्शन की गई है, वी केम टू नो कि कॉलम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंक्रीट स्ट्रेंथ आपको FC प्राइम 3000 सिलेंडर आसानी से मिल रहा है कॉलम के अंदर। नंबर ऑफ स्टील बार्स मेंशन इन द डिज़ाइन बिल्कुल ओके है कॉलम में। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? साइजेस ऑफ कॉलम्स ठीक है, डायमेंशनिंग ठीक है। द प्रॉब्लम वाज ओनली द कॉन्ट्रैक्टर वाज नॉट फोकसिंग ऑन दिस टाइज आर द रिंग्स इन द कॉलम। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से आप पूछे ना कि कॉलम में ये रिंग क्या मकसद है, उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज ट्रांसफर इन्फोर्समेंट, वो नहीं समझता, ना ही वो शेयर टाइज पे समझता। तस्वाया था रिंगान हुआ है, रिंग्स रिंगान देवता रिंगान हुई। ऑल द कॉन्ट्रैक्टर्स, अगेन आई एम कोटिंग देम बिकॉज दे आर द बुलशिट पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, इंजीनियरिंग सोसाइटी। So when we ask them what is the use of this ties, the ringan se da pare samani kan wo isam nishta da khase di da ho behtar de pazita so pen sariya ruli nare sariya hai na ringan jod ki khabara khatma। हाँ, whenever I see execution of column, जहाँ पे हमने डिज़ाइन में स्पेसिंग 4 इंच दी होती है, वहाँ पे उसने साइड पे क्या दी होती है? 12 इंच। रिंग में स्पेसिंग क्या दी होती है? 12 इंच। तो स्ट्रक्चर के अंदर, डिज़ाइन के अंदर लिखा हुआ है कि 4 स्टोरी के लिए डिज़ाइन हुआ है। मेरे हिसाब से अगर रिंग की स्पेसिंग 12 इंच है, वो 1 स्टोरी के लिए भी डिज़ाइन नहीं हुआ, वो 4 स्केल के अर्थ में सारा फेल होकर गिर जाएगा। ओनली वाई? बिकॉज ऑफ दिस नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइज। फॉरेन में, पूरी दुनिया में जितनी रिसर्च हुई है अर्थक्वेक डिज़ाइन पे, जितने भी इंजीनियर्स PhDs वाले उन्होंने रिसर्च पेपर्स निकाले हैं, जितना भी, सबका आउटपुट ये था दैट इफ़ यू कैन अचीव गुड टाइज स्पेसिंग इन अ स्ट्रक्चर कॉलम्स, द स्ट्रक्चर इज सेफ अगेंस्ट द अर्थक्वेक। रिमेंबर, सबका आउटकम लेक्चर्स रिसर्च पेपर्स का यही था। बाज़ ने तो प्रैक्टिकल वैल्यूज दी थी, वही वैल्यूज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो नाउ अब मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई है। रिंग्स की इंपॉर्टेंस कॉलम में क्या है? पूरे का पूरे स्ट्रक्चर का दारोमदार इस रिंग के ऊपर है, इस जो सिर्फ कॉलम में यूज़ की जाती है। चाहे आपकी 10 स्टोरी बिल्डिंग है, 20 स्टोरी बिल्डिंग है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस टाइज स्पेसिंग। अगेन दिस इज द मेन लाइन, इट इज़ द मेन, इट इज़ आई वुड से इट इज़ द ट्रेंड लाइन ऑफ अर्थक्वेक डिज़ाइनिंग। तो जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं अर्थक्वेक डिज़ाइनिंग में, चाहे वो हाई राइज डिज़ाइन कर रहा है या सिंगल स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहा है, दिस इज़ व्हाट ही हैज़ टू अचीव। तो हम अक्सर अपने स्केचेस में सारा फोकस हमारे स्टाइल्स के ऊपर होता है, लेकिन बहुत से BSc इंजीनियर्स जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट होकर आ रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि टाइस है कहते हैं किसे हैं, ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टील इन RCC स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस टाइस, कुछ आइडिया नहीं है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर ब्लंडर कर रहा होता है, वो साइड इंजीनियर्स भी वही ब्लंडर कर रहे होते हैं। Now let me come to this now. Okay, the tie spacing recommendable for SMRF structures between the in the columns is 4 inches center to center, 3 to 4 inches, 3 to 4 inches. Your tie spacing should not be more than 4 inches in the column rings in the structures which are resistant against the earthquake, और especially कौन से हों? SMRF। अगर IMRF है तो उसमें फिर आपकी टाई स्पेसिंग 6 इंच से लेके 8 इंच तक जा सकती है, लेकिन SMRF में कभी भी वो 4 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तकरीबन 2700 रिसर्च पेपर्स की आउटकम है, जिन्होंने प्रैक्टिकल बीम्स को एग्जीक्यूट किया है, उसको UTM में टेस्ट किया है, शेकिंग टेबल पे टेस्ट किया है, अर्थक्वेक जोनिंग के हिसाब से टेस्ट किया है। द कंक्लूजन ऑफ ऑल द रिसर्चर्स इज दैट द टाई स्पेसिंग बिटवीन द कॉलम्स शुड नॉट बी मोर देन 4 इंचेस सेंटर टू सेंटर। And I am giving you the conclusion of all those researchers. Okay, एक तो ये हो गया, right? Second thing is that, चलिए हम बाद में डिस्कस। Second thing is that what should be the ending of this ties? It should be this 135 degree who compulsory है, compulsory। कॉलम की किसी भी रिंग में
आप तो इसको रिंग ही कहते हैं ना, बिकॉज you are actually like contractors, you don't know what is ties, what is shear ties, what is transverse enforcement, you call this as rings. तो मैं आपकी जुबान में बोल रहा हूँ rings. The rings का जो एंगल है, एंडिंग एंगल जिसको हम हुक कहते हैं, इसको हम सीजमिक हुक भी कहते हैं, it should be always, it must be, it has to be 135 डिग्री. अगर इससे कम है इसको हम अर्थवेक टाई कहते ही नहीं है. ASTM 615 says that your earthquake type, even BCPS P07, UBC 97, ACI 31818, सब में लिखा हुआ है कि earthquake tie वो टाई होती है जिसमें आपका एंडिंग हुक या आपका एंडिंग ऑफ द टाई है वो 135 डिग्री हुक पे होगा. 135 डिग्री यानी बेंड हुआ होगा, 90 डिग्री नहीं होगा. अगर ये नहीं आप अचीव कर सकते, इट मीन्स दैट यू आर नॉट डिजाइनिंग द earthquake resistant structure. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग टाई का एंगल है. फर्स्ट थिंग टाई की स्पेसिंग है. थर्ड थिंग, अगर आपका कॉलम की डायमेंशन ज़्यादा है तो आपने एक से ज़्यादा टाइस यूज़ करने हैं उस कॉलम को होल्ड करने के लिए. ये आपका राइट साइड पे उसके ऊपर फोकस किया गया है. राइट, यू कैन सी दिस मेन टाई transverse enforcement. You can see the secondary ties here along the x-axis, along the y. What are the secondary ties? These secondary ties are provided if your column size is more than, नंबर याद रखें, if your column dimension in any side, x-axis पे, y-axis पे, अगर वो 12 इंचेस से ज़्यादा है, 12 by 12 इंच से ज़्यादा है. अगर आप कॉलम जो 12 में 12 इंच है ना, 12 by 12 इंचेस, that is fine. You can deal this column with a single tie. लेकिन जब वो 12 इंचेस से ज़्यादा हो जाए, सशु 12 इंच से ज़्यादा हो जाए, 14 इंच, 15 इंच, 18 by 18 इंच कॉलम, 12 by 18 इंच कॉलम, 24 by 24 इंच कॉलम, वी हैव इवन डिज़ाइन 4 by 4 फीट कॉलम, तो उसमें फिर आपकी एक कॉलम की टाई काम नहीं करती. यू हैव टू प्लेट सेकेंडरी टाइज, इंटरमीडिएट टाइज इनसाइड लाइक दिस वन. देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी. और रिकमेंडेबल डिस्टेंस जो होता है बिटवीन सेकेंडरी टाइज वो क्या होता है? इट इज़ नॉर्मली 6 इंचेस. सुन लो जी, 6 इंच. राइट, एंड SMRF structures recommends that your column dimension, if it is more than 12 by 12 inches, then the intermediate ties spacing should be not be based on the dimension, it should be based on the alignment of the main bar. ये आपकी मेन बार है ना, तो देखिए एक स्टील छोड़ के दूसरी स्टील के साथ आपकी सेकेंडरी टाई है, एक स्टील छोड़ के दूसरी मेन बार के साथ आपकी क्या है? सेकेंडरी टाइज. इस तरह से आगे जा रहा है, जितना कॉलम आगे जा रहा है. ये केस आपका वाई एक्सिस पे भी है, एक स्टील छोड़ के यहाँ पे देखिए, यहाँ तो एक ही स्टील है तो सेंटर में एक टाई आएगी. सो दिस सेकेंडरी टाइज आर आइडियली प्लेस्ड एट ईच अल्टरनेट बार, एक छोड़ के एक के ऊपर. देख रहे हैं आप, या अगर आप इसको न्यूमेरिकली लेते हैं तो 6 इंचेस सेकेंडरी टाइज में स्पेसिंग होनी चाहिए. किस कॉलम के लिए? दोज कॉलम्स हैविंग डायमेंशन मोर देन 12 by 12 इंचेस इन कंक्रीट. राइट, इट इज टू अचीव SMRF प्रॉपर्टीज. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ओवरलैपिंग ऑफ द कॉलम स्टील. मेन स्टील जो है इसका ताल्लुक अब टाइल्स से नहीं है. पहले आपने टाइल्स को हैंडल किया बिकॉज जितने रिसर्चर्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, उसमें मेन फोकस जो है कॉलम स्टील से ज़्यादा कॉलम टाइल्स के ऊपर है, इसलिए मैंने इस स्लाइड को पहले डाला हुआ था. देन फॉलोड बाय दिस मेन स्टील. इसमें सबसे मेन चीज़ इसकी जो है मेन स्टील की ओवरलैपिंग पोजीशन है. इसको हम टेंशन स्प्लाइस कहते हैं. ठीक है ना, ये भी आपकी स्प्लाइसिंग एरिया, जिसमें बीम में मैंने बताया ना, बीम के लिए हमने क्या बताया? द स्प्लाइसिंग एरिया शुड बी 2h डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द सपोर्ट. लेफ्ट है कि राइट है, इसके करीब कभी नहीं जाना. और सेंटर में भी आप कभी स्प्लाइस नहीं कर सकते. याद रखें, बीम के सेंटर में मैक्सिमम मोमेंट होती है, तो अर्थक्वेक में तो वो इतने क्रिटिकल नहीं होता, लेकिन आपकी स्टैटिक लोडिंग जो होती है, डेड लोड, लाइव लोड, उसमें सेंटर में हमेशा डिफ्लेक्शन आती है. कभी भी आप बीम के सेंटर में ओवरलैपिंग नहीं दे सकते, ना सपोर्ट के ऊपर दे सकते हैं. इट शुड बी बिटवीन द सपोर्ट एंड द सेंटर, ये जगह. और रिकमेंडेड क्या है? 2h डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द सपोर्ट. कॉलम में कौन सी पोजीशन है? कॉलम इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू बी एट द सेंटर. कॉलम में कहाँ पे रिकमेंडेड? टू बी एट द सेंटर. तो अगर कॉलम की एक हाइट एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक लेट से 10 फीट है, तो इसका मिडल थर्ड जो है वो बनता है तकरीबन सेंटर वाला 3 फुट जो है, 3.5 फुट. इसको हम कहते हैं मिडल थर्ड हाइट. तो आपका जो कॉलम की मिडल हाइट है, मिडल हाइट, ये आपकी हाइट नियर टू द स्लैब है, ये आपकी हाइट नियर टू द फ्लोर है. द हाइट विच इज इन द मिडल ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड द मिडल हाइट, एंड नॉर्मली वी कॉल इट एज मिडल थर्ड हाइट. So this is the most recommendable position to overlap the steel, main steel, in each column of our CC structure frame. Middle third. और इसका जो लेंथ है ओवरलैपिंग की, ये पे डिपेंड करता है, ये पे कभी डिस्कस करेंगे. नॉर्मली ये जनरल ये है कि आपका 40 ग्रेड स्टील जो कि अर्थक्वेक में यूज़ नहीं होता, उसमें 50 dB होता है. और आपका जो 60 ग्रेड स्टील है उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखें, ये नीचे लिखा हुआ है 60 ग्रेड स्टील of 6.3. द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओवरलैपिंग लेंथ इज 70 dB. dB स्टैंड्स फॉर डायमीटर ऑफ द बार. तो अगर आपका नंबर 8 बार है, जिसको हम 1 इंच डायमीटर बार कहते हैं, तो उसका फिर ओवरलैपिंग पोजीशन में लेंथ कितनी आएगी? 70 इंच.
अगर आपका नंबर 6 बार है ये आएगी तकरीबन 48 इंचेस, अगर आपका नंबर 5 बार है तकरीबन आएगी 36 इंचेस। ये तो ओवरलैपिंग लेंथ है जो इस फार्मूले से निकलती है ग्रेड 60 स्टील के लिए अर्थक्वेक डिजाइनिंग में। बट द पोजीशन शुड ऑलवेज बी मिडल थर्ड, वेदर इट इज नंबर 6, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 5 जो भी है। नंबर 4 तक कमेंडेबल भी नहीं है कॉलम में, नंबर 5, 6, 8 होती है, 7, 8 भी होती है। सो दिस इज द सेकंड गाइडलाइन फॉर अचीविंग द कैपिटल R value as maximum. Your column main steel should be overlapped only at the middle third, at the center. Unlike beams में middle third allowed नहीं है, उसमें 2H from the support है। Now second thing, the beam where it connects with the column, ये देखिए आपका beam है ना, column से pass हो रहा है frame बनाने के लिए। beam whenever it connects with the column, it should be having a close tie, इसको हम close tie कहते हैं। top steel of the beam should be inverted, should be bended downward, while the bottom steel will be bent upward, and it will create a close tie here. This close tie does not allow the beam to separate itself from the column at the time of earthquake. इसको हम कहते हैं joint designing। तो earthquake designing में एक main role joints के designing का भी होता है। उसमें RCC structure में सबसे important joint का element जो है क्या है, you should have a close tie। ये close tie, अगर आप कहीं देखें ना कहीं साइड पे एग्जीक्यूशन हो रही है कॉलम का और बीम का जॉइंट के ऊपर बीम का स्टील सिर्फ ला के इस तरह रख देते हैं, बॉटम स्टील ला के रख देते हैं। Now do not allow that concrete to be poured. Cancel this beam. Cancel it. You are actually the site engineer. You are responsible for the project. You will be called on for inquiry अगर आपने एग्जीक्यूशन सही हो ना होने दी। ठीक है, बहुत से इंजीनियर्स मैंने देखे वो इन एग्जीक्यूशन में फॉल्ट की वजह से, ब्लंडर्स होने की वजह से उनको आइडिया नहीं होता, उनकी जॉब चली जाती। आई हैव सीन सो मेनी SDOs being removed from their jobs because वहाँ पे उनकी एग्जीक्यूशन को टेक्निक उनको नहीं आती, तो आप क्या एग्जीक्यूट करेंगे? सिर्फ आप ये जाएंगे बताएंगे कि मैंने RCT 2 का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और मैं पास हुआ, मेरा CGPA इतने। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड ऑन साइट। यू नीड टू हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन विथ यू टू टेक इट विथ योरसेल्फ ऑन द साइट व्हेन यू आर डूइंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। आई डू रिमेंबर 2 ऑफ माई स्टूडेंट्स, वो तकरीबन है तो 2004 का बैच था, 16 years back. They are now the PMs of mega companies in UAE and Saudi Arabia, गल्फ में वो जॉब कर रहे हैं। सो आई डू रिमेंबर इन देयर फर्स्ट जॉब दे हैड डन अ ब्लंडर, और साइड इंजीनियर्स थे और उनसे ये ब्लंडर हुआ था, तो उसकी वजह से उनको डिपोर्ट कर दिया था। दे वर नॉट अलाउ टू गेट, दे वर नॉट गिवन अ जॉब इन एनी कंपनी इन गल्फ बिकॉज ऑफ दैट सिंगल ब्लंडर। तो ये सारे एग्जीक्यूशन टेक्निक्स हैं और ये आपको आनी चाहिए, बिकॉज नाउ यू आर BS engineers, you will become BS engineers after this semester, so you should be having all this information. It should be traveling with you all the time, whether you are standing on a side, you are sitting in an office, you are discussing something, you are giving the interview to some agency, you should have this information। उधर हम यही बैठ के पूछ रहे थे आपसे। ओके जी, डन विद दिस थिंग। नाउ जस्ट टू कंपेयर द SMRF विद IMRF, 4 चीज़ों में एक दूसरे से डिफरेंस है। बाकी जितने भी SMRF के स्टैंडर्ड्स हैं अर्थक्वेक के, वो IMRF स्ट्रक्चर्स में भी लागू होते हैं। वी हैव टू अप्लाई द सेम स्टैंडर्ड्स ऑन दिस स्ट्रक्चर एज वेल। OMRF में स्टैंडर्ड्स कोई नहीं होते, याद रखें, इसलिए उसको हम OMRF कहते हैं, जिसमें R की वैल्यू जो है हम 2.5 अचीव करते हैं, जो कभी भी अर्थक्वेक डिजाइन में रिकमेंडेबल नहीं है। यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट हैव R वैल्यू ऑफ 5.5 और ग्रेटर। व्हाट इज दिस थिंग? जैसे हमने डायमेंशनिंग के ऊपर डिस्कशन किया ना कि L/D रेशो, B/D रेशो, वो क्रॉस सेक्शनल रेशोज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो IMRF में अगर आप नहीं भी अचीव करते इट्स फाइन, लेकिन SMRF में आपने अचीव करनी होती है, राइट। सो फॉर एन ऑर्डिनरी बीम इन IMRF स्ट्रक्चर्स, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स, तो उसमें कंपल्सरी नहीं है कि आपकी L/D जो है वो ग्रेटर देन 4 हो और आपकी जो है B/D जो है वो लेस देन 0.3 ना हो और समथिंग, वो चीज़ें यहाँ पे इतनी ज़रूरी नहीं है IMRF स्ट्रक्चर्स में। लेकिन याद रखें व्हेन वी टॉक अबाउट IMRF स्ट्रक्चर्स, द R वैल्यू कैन बी मैक्सिमम टेकन एज 5.5, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो हमारी हमेशा अर्थक्वेक डिज़ाइनिंग में अचीवमेंट ये होगी कि हम R इज इक्वल टू 8.5 अचीव करें स्ट्रक्चर्स की कैलकुलेशंस में और डिज़ाइन में। फ्लेक्सिबल स्टील जो है उसमें लेस स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए SMRF में, IMRF में अलाउड है। लेस स्ट्रिंजेंट का मतलब है उसकी पर्सन इलांगेशन, जो कि एक प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन टेस्टिंग में हमें पता चलती है। तो SMRF स्ट्रक्चर में 10% है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। IMRF में अगर ये 9% भी है तो इट इज़ फाइन। डायरेक्टरी बता रही है, जो कि एग्जीक्यूशन या टेस्टिंग से रिलेटेड है, डिज़ाइन का हिस्सा ये नहीं है, डिज़ाइन का हिस्सा ये डायमेंशनिंग डिज़ाइनिंग है, राइट। दैन दिस ट्रांसफर स्टील, तो मेन चीज़ जो है आपकी कॉलम की जो टाइज हैं वो SMRF में और IMRF में सेम है। आप कभी भी 12 इंच में और 9 इंच में टाइज को अलाउ नहीं करेंगे कॉलम के अंदर, या आप कभी भी बीम के अंदर जो है ओवरलैपिंग पोजीशन में खुले स्पेसिंग को अलाउ नहीं करेंगे रिंग्स या स्टिरप्स के अंदर, राइट। दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है। अर्थक्वेक डिज़ाइन का मेन हिस्सा ये स्टिरप्स और टाइज आर द गाइडलाइंस ऑफ अर्थक्वेक डिज़ाइन। तो स्टिरप्स कहाँ पे यूज़ होती हैं? बीम्स में। टाइज कहाँ पे यूज़ हो रहे थे? कॉलम्स में। रिमेंबर दिस। नाउ
ओवरलैपिंग। सो ओवरलैपिंग में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा रिलैक्स मोड दिया जाता है हमें कोर्स में। जब आप IMRF स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो आपके लिए ओवरलैपिंग रिक्वायरमेंट ये नहीं होती कि आपका कॉलम में जॉइंट हमेशा मिडल थर्ड में आएगा, आपका बीम में जॉइंट हमेशा जो है तो 2H डिस्टेंस में आएगा। लेकिन ये याद रखें कि ये IMRF स्ट्रक्चर्स जो है, व्हेन वी आर अलाउड टू यूज दिस स्ट्रक्चर्स फॉर माइनर सीजमिक जोन्स लाइक सीजमिक जोन 2A, अब पिशावर 2A में नहीं आ रहा, पिशावर 2B में। मैक्सिमम सिटीज ऑफ KPK आर इन सीजमिक जोन 2B, तो वहाँ पे तो आप IMRF बना ही नहीं सकते। आपको सीजमिक मैप याद है 2 लेक्चर्स बैक, राइट? तो उस सीजमिक मैप में आपका पंजाब के कुछ सिटीज़ हैं वो 2A में आ रही हैं, कराची आपका 2A में आ रहा है, इस तरह से 2-3 एरियाज। तो वहाँ पे आप जो है DI खान, हाँ KP का जो कि DI खान है, डियर इस्माइल खान, ये जोन 2A है, DI खान जोन 2A। तो यहाँ पे आप IMRF स्ट्रक्चर अलाउ कर सकते हैं। पिशावर में यहाँ पे मैंने मैक्सिमम देखा क्या और होता है, सारा जो है तो 2A की तरह डिजाइनिंग हो रहा है। आप देखें मैक्सिमम जाके कभी भी कॉलम की ओवरलैपिंग जो है सेंटर में नहीं होगी, या फ्लोर के करीब होगी या छत के करीब, हमेशा फ्लोर के करीब होती है। दे वांट टू सेव द स्टील, द स्टील बजातो लेकिन ओवरलैपिंग मुंचन तपास बस 2 फुट ओवरलैपिंग बार। यू आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन 2 फीट ओवरलैपिंग, फोकस ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरलैप। इसको हम इलास्टिक हिंज जोन कहते हैं कॉलम में अर्थक्वेक के टाइम पे। ये आपके प्लास्टिक हिंजेस है। प्लास्टिक हिंज वो होता है जहाँ पे आप मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जो है तो एक्सपीरियंस करेंगे। तो डिफॉर्मेशन वाली जगह पे अगर आपने जॉइंट दिया हुआ है तो स्टील खुल जाएगी, चाहे जितनी भी टाइज इसमें स्टील यहाँ पे खुल जाएगी, स्टील खुलेगी, कॉलम की कंक्रीट क्रैक होगी, जॉइंट फेल होगा, कॉलम गिर गया, पूरी स्ट्रक्चर फेल। ओनली बिकॉज अंडर सिंगल ब्लंडर you can let the whole structure to get filled. So never allow this overlapping from close to the floor or close to the roof. It should be in the middle, elastic hinge zone, जहाँ पे सबसे कम deformation के chances होते हैं। Okay, so we have actually discussed these basics of execution of SMRF structures to get maximum value of R in the earthquake designing of structures. Now, in the coming lecture, we'll be discussing some codes which are not linked with SMRF and IMRF. These are the design codes for RCC structures overall, जिसमें आपका लाइव लोड, डेड लोड, ये सारे जो लोड्स हैं ना, इसको टैकल किया गया है। तो उन कोड्स को हम नॉर्मली डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो भी अभी हम कोड्स को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम डिज़ाइन पैरामीटर्स आज डिस्कस कर रहे थे, एग्जीक्यूशन ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स का। ये सारे जो हमने चीज़ें डिस्कस की है ना, याद रखें आपके डिज़ाइन का हिस्सा है। इसमें अब कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये मेन रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन की। जो आपका डिज़ाइन का आउटपुट होता है वो क्या होता है? दैट इज़ नॉट कैलकुलेशन, दैट इज़ एक्चुअली द स्केच दैट यू गिव टू द साइट इंजीनियर। So if you have done blunder in this site execution sketch, तो आपकी जितनी कैलकुलेशन है तासो चार अर्स में कैलकुलेशंस करी दी, तासो चार सो मेरा कॉलम जपारा मेन स्टील रोक के दे या टेम्परेचर स्टील दा स्टाइल स्टील रोक के दे, कतासो एक स्केच क्या है एग्जीक्यूशन सही ना दे खोले निसासो द कैलकुलेशन या द डिजाइन इस फायदा निश्चित, नो नीड, it will be called zero. It in a paper even if you are not able to get the good sketch, you will lose 50% of your marks। अगरचे पेपर वाले डिजाइन कोई साइट पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, but as a understanding, if your sketch is not according to the codes, your design calculation gives me nothing, right? So you'll definitely get 50% marks out of the question. Why I am doing this thing? Because to let you know, please remember these things, remember these closed ties। ये इवन आजकल मैं MSc इंजीनियर्स के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ तो उनको पता नहीं है क्लोज टाई किसे कहते हैं, बीम का कॉलम से कनेक्शन कैसे बनेगा। दे इवन डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड टेंशन स्प्लाइस, कहते हैं टेंशन स्प्लाइस से तो दे तो हम ओवरलैपिंग हुई, दिस इज टेंशन स्प्लाइस। They even don't know what is the secondary ties, when it should be provided. They don't know how 2H is achieved. अक्सर मैं देख रहा हूँ तो बीम की जो जॉइंट है ना और स्टील का कॉलम के ऊपर ही दे रहे होते हैं। They said that this is ideal. Recently I visited a site and there was an engineer who was having 7 years of experience. एक BSc engineer है, MSc लाने निकले, I cannot call the name of that engineer, and he was graduated from UET. Strange. Doing execution of various projects for the last 7 years, and he was providing the steel overlapping of all beams at the column beam joint. Numa warte ne taposo ko deze ke da steel ole cut de, he said che datulo na serji datulo na mazbut zei gane datulo na dalta column prot de support no deva janam da beam chikam de I steel per support by saro che dalta datulo na mazbut zei de me afar inchi pat you have not I mean come to know that this is the most critical part of earthquake designing, that your joint of beam should not be at the column. जैसे कि सासो कॉलम के लग मूवमेंट डालो बीम बजानते हैं बेल की, जैसे कि सासो सॉलिड स्टील बकार दी, you cannot allow the joint of beam steel at the joint of column beam joint with आप स्टील का joint allow ही नहीं कर सकते। So perhaps he have never seen this slide, he is not familiar with these codes, design standards, सारी चीज़ें, लेकिन आप तो सीख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, तो you should remember this thing।
I'm preparing these slides, I'm presenting this to you only for your upgradation of knowledge. You see, this clearance or getting good marks in the subject is not the target you should be having. You should be having the target to get all the knowledge related to practical execution of design, right? ये purpose है RCT2 का, इसलिए मैं I'm studying this subject for the last 20 years. I do remember 2001 से मैंने ये subject teach करना शुरू किया हुआ है, and I always try to get this subject. I always prefer to get this subject for the students because this is the final touch that we normally give to the BS engineers, and they should be having all this knowledge. Otherwise, they'll go with no information, I would say. So all the knowledge that has been shared with you in this lecture has been taken from all these codes: BCPS B07, UPC 97, and the ACI 318 version of the American Concrete Institute. Now, if you have got any question related to today's lecture, you can ask. In the next class, we will be dealing with the RCC codes, which will be acceptable for seismic as well as for the static loading. तो next lecture हमारा वो भी codes के बारे में important है, execution techniques उसमें भी हम सीखेंगे, so that will be important for you to attend that lecture as well. Now let me see the joining chat program if there is any question. Yes, there is a question asked from Shahzad. He said that's explain the joint between column and beam. Okay, I cannot explain in depth because आपको भी joint designing आती नहीं है ना, आपने BRCD1 में सिर्फ basic सीखे हैं डिज़ाइन के. But let me explain. कॉलम बीम जॉइंट जो होता है, ये सबसे लूज एरिया होता है किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर का. आपने स्ट्रक्चर 1, 2, 3 में मुख्तलिफ हमारे जूनियर इंजीनियर से उससे आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपको ये जो सपोर्ट्स पढ़ाई आती है ना, रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, द सपोर्ट से द पारी, दिस एक्चुअली डिफाइन व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ जॉइंट ऑफ वन फ्रेम एलिमेंट विद अनदर फ्रेम एलिमेंट, राइट. तो आपका अगर कॉलम जो है, फाउंडेशन जो है वो सपोर्ट है, वो भी एक जॉइंट ही है. कॉलम का फाउंडेशन के साथ एक जॉइंट एक सपोर्ट की शक्ल में है ना, राइट. इस तरह से आपका कॉलम का जॉइंट बीम के साथ जो है लाइक हेयर, या आपका कॉलम का जॉइंट स्लैब के साथ या बीम का जॉइंट स्लैब के साथ, दीज आर ऑल द जॉइंट्स व्हिच एक्ट ईदर रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट. तो ईच दिस एक्चुअली डिफाइंस द डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF जिसको हम कहते हैं, या इनडायरेक्टली इसको हम KI कहते हैं, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, राइट. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली आपका ये रिप्रेजेंट कर होता है कि जॉइंट कितनी डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर रहा है, राइट. अगर मैं यहाँ पे क्लोज टाई न देता तो ये कॉलम और ये बीम आपस में क्या होते, फ्री होते ना. तो यहाँ पे आपकी हम फिक्स सपोर्ट हम अचीव कर सकते हैं, नो. बट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RCC डिजाइनिंग इन RCC स्ट्रक्चर्स, इवन इन स्टील स्ट्रक्चर, इज टू गेट अ फिक्स जॉइंट्स ऑल द टाइम. तो स्टील में तो पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पे तो अक्सर हिंज सपोर्ट्स होती हैं, बिकॉज आपके रिवेट्स, बोल्ट्स और रिवेट्स आपके फिक्स जॉइंट के लिए यूज नहीं हो सकते. बट आपके RCC स्ट्रक्चर में यू कैन अचीव फिक्स सपोर्ट जॉइंट. फिक्स सपोर्ट आपकी होती है फुली रिस्ट्रेंड, जहाँ पे ना मूवमेंट एक्स एक्सिस पे अलाउड है, ना वाई एक्सिस पे अलाउड है, ना जेड एक्सिस पे अलाउड है, जिसको हम फिक्स सपोर्ट की तरह लेते हैं, जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रेंड जॉइंट या रिस्ट्रेंड एंड, फुली रिस्ट्रेंड एंड. वो हम प्रैक्टिकली इस तरह से अचीव करते हैं. ताकि गोरे लगे क्लोज टाइज, द प्रॉपर बेंडिंग ऑफ कॉलम टॉप, बीम टॉप स्टील, बीम बॉटम स्टील. तो ये हर एक जॉइंट में ये चीज़ अचीव करना कंपल्सरी है टू गेट द फुली रिस्ट्रेंड एंड, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंटेन कर सकते हैं. तो अर्थक्वेक में अगर आपका कॉलम बीम जॉइंट में मूवमेंट ही नहीं हो रही तो आपकी स्ट्रक्चर डैमेज कैसे होगा, वो सेव हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड द जॉइंट, कॉलम बीम जॉइंट्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस सच है. ओके, काइंडली रिपीट द फर्स्ट पैरामीटर FY minus FC. द हमारे डिटेल की तरफ से एक्सप्लेन को मोहम्मद सलार. लेट मी ब्रीफली टेल यू दिस अगेन. ओके, हियर वी आर. There are two parameters given to us as guidelines by ASTM standards A615, which represent the steel structure, steel properties for billet steel, right? तो स्टील बार सारे इसमें आते हैं. तो इसमें पहला आपको ये बता रहा है कि आपका जो एक्चुअल साइड पे स्टील आपके पास आई है, नुदा स्टील के तास तो ये ज़्यादा स्ट्रेंथ कर गई है, यील्डिंग स्ट्रेंथ तास और यूटीएम मान टेस्ट को नुदा तास तो मिलाओ शु मिसाल पतोर 45,000 PSI और द ग्रेड 40 स्टील देनो द एक्चुअल स्ट्रेंथ सुमरी 40,000, yielding strength is 40,000. तास तो मौका बने मिलाओ शु 45,000. So this is fine. Difference between actual and side से 5,000, that is fine. But if your side strength of yielding side yielding strength of steel is let's say 60,000 और वो बंदे निकल छे with the design के दास तासु grade 40 steel design दे न बिया तासु 60,000 PSI yielding strength अलाउ नहीं शिकोले because तासु FY च कम दे 60,000 grade 40 के बारे सुमरी FY 40,000 ओका FY तासु तमिलावी के मौका बंदे 60,000 पर दे खुशाल नहीं बकार जान. It is not good thing. This is something which is actually creating, you are violating the codes which says that the difference between the actual strength and the design strength mentioned in the design, it should not be more than 18,000, it should be 10,000 maximum, I would say. तो आपको ये चीज़ ये बता रहा होता है कि difference of
actual strength and design strength which is mentioned in the notes of design which is done by the designer, उसमें डिफरेंस जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. प्रैक्टिकली कितना ज़्यादा होना चाहिए? 10,000 के एसआई, 10,000 PSI से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो ये एक गाइडलाइन है और ये हमें दो बेसिक गाइडलाइंस जो हैं हर एक स्ट्रक्चरल स्टील जो हम किसी आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं उसमें हमने चेक करनी होती है दोनों. इनमें से एक भी अगर रह गई, आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी क्यों ना हो, आपका टेक्निकली वो बीम वो कॉलम वो स्लैब फेल होगा. राइट, दा खबर देखे मुझे डिस्कस करी थी STM सारा रिलेटेड. हाँ, द STM का गाइडलाइन ला कही लगी थी. ओके, Asadullah has a question. Can you explain slide number 8? Okay, let me see the slide. Slide number 8. Slide number. هذا هو overlapping بارا كده كنا. This slide كم نقدر دوشن وقاري. Number 1, how to achieve overlapping of long steel in columns. What is the position? Why this is recommended? Because this is the position of elastic hinge where you will experience very small deformation, bending, shading. पकड़ेर कम ही जैसे क्या कलास्ता सो ज़लज़ला राशि कालम के जोल राजी का ना it behaves like a snake. our that's explained when we were discussing this initial lectures of earthquake. जिस सासु लांदे वाला पोर्शन चिकम दे कालम वाला मख के रवानी और बराने चट सरा इसे चिकम दे हाफ पलजे के पास जैसे इनर्शिया फोर्स में पूरा स्नेक ने जोश कालम is like this tilting mode की ना. No total ज़्यादा deformation कम से के possible दे near to the floor, near to the slab joints. तो तासु joints सरा close areas के चरेम the column main steel के overlapping maneuver का. It should be in the middle third which is the most safest place. Number 1. और देखे भी अब बता दें तासु कर overlapping work it should be according to the standards. 70 dB is the requirement of overlapping length for grade 60 steel. 50 dB is the requirement for overlapping length in grade 40 steel, and the position should be middle third. Secondly, देखे तास तख्कारी चिसा सु column beam joint सरंग बका दो. देखे कि beam top steel और कदा beam bottom steel, it should not end directly, but it should end with a hook. It should be end with a reverse hook, so that you can achieve a close end at the end of the column beam connection. That's the achievement. That is what is explained in this two portions of the slide number 8, right? Okay, Shahzaman has another question. Explain minimum and maximum spacing between ties and stirrups. That's a maximum minimum spacing. Now, बच्चे तासु कला practical मुझे problem solve करो ना. You will see yourself जे maximum tie spacing सुमरा दे, minimum tie spacing सुमरा बकार दे, और side बांधे मुझे सिंगा वर्क होने दा अल्टा मुझे explain को. When we do this practically शे मुझे calculate करो ना through numericals. No है कि तब से बता clear शीशे minimum maximum spacing सुमरा बकारी. दल तक कम ACI guideline ला ACI और द BCPS visualization guideline दा हदा दे सासु spacing SMRF structures दा पारा 4 इंच बकारी द ties के minimum और maximum चिकम दे आहा बिया depend कई चिदा SMRF दे IMRF दे OMRF दे. तब हम discuss को when we do the designing of columns, right? Columns के बिया तासु दो किस्म columns को design कर. We will be dealing with the concentric columns, we will be dealing with the non-concentric or eccentric columns जो है कि uniaxial columns and the biaxial columns. That whole design सासु RCD2 हिस्सा दा आया कि मुझे detail के in depth दा explain को. ठीक शो जी. और खबर पाते शुदा beam stirrups बारा के नो दा हम SMRF और IMRF से related दे, but anyhow the spacing should not be more than should not be less than 4 inches. ब्या होडे जुगती है ना हो चुका है ज़्यादा ताल्लुक चिकम दे बिया type of structure पोले दे सासो position of the stirrups पोले दे कि maximum shear zones ही minimum shear zones ही. I think you have studied that maximum minimum shear zones in RCD1. If not, we'll explain this in this course as well. नहीं कि बता सनोर हम क्लियर बशी कम से के मैक्सिमम स्पेसिंग ही स्टिरप्स के कम से के मिनिमम ही लोकेशन सब बकार दे और फार्मूले दा पारा मुख्तलिफ दी कम ममूंगा इस्तेमालो when we'll be solving the numerical problems in the coming lectures. Okay, DB means DB stands for diameter of the bar. Diameter of the bar, capital D small b, diameter of the bar which is being used. Okay, so diameter of the bar चिकम दे दे base band तासो hooks length, the overlapping length, the splice length, that whole tasu decide on the basis of dB. This is what is explained in the codes. The codes which come tool connections or the length of steel connections come there amukta milavigi not tool in terms of dB milavigi. dB stands for diameter of the main bar. Okay, so I think I've answered. I hope that I've answered the question that has been asked by the students. So if I think that is sufficient for today, we'll conclude today's lecture, and inshallah in the coming lecture we'll come with the RCC design codes related to static load, जिसमें dead load भी आता है, live load भी आता है. दे सारा related मुझे RCC design aspects हम discuss को एक ठीक शुक्र है.
So inshallah, see you in the next class with a new topic. Till then, Allah Hafiz.